Hey, hello everyone. So we are going ahead with number system. So let's don't waste the time and directly move on to the part of the number system. तो number system होता क्या है? That is basically the system of numbers. So yeah, the first thing in number system is that we will go through the every type of numbers which we have in the number system. The first type is real number. Real number क्या होता है? The number which can be represented on a number line. Number line क्या होता है? सपोज दिस समथिंग कॉल्ड एज नंबर लाइन, जहाँ पे हमारे पास ऐसे डिनोटेशन होते हैं. सपोज दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज -1, दिस इज -2, -3. So this particular showing of number in a line is called as number line. And जिस भी नंबर को हम लोग इस नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, that are particularly called as real numbers. What are imaginary numbers? Number that cannot be shown visually, that cannot be shown on a number line, cannot be shown on number line are called as imaginary numbers. So where do we show these numbers? That are a different kind of plan known as argand plan, जिसपे हम लोग complex number को show करते हैं, और we can say imaginary number. What is complex number? Complex number basically consists of real number plus imaginary number. Okay, so how it is represented? It is represented as a plus iota b, where a represent the real part and iota b represent the complex or imaginary part. So yeah, इसको represent करने के लिए we have the argand plan. और जो हमारे रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा प्लान यूज़ किया जाता है? दैट इज कॉल्ड एज कार्टेशियन प्लान. रियल नंबर नहीं बोल सकते, वी कैन से दी रियल कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट्स मतलब जो ये होता है ना, जहाँ पे हम लोग इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस रहता है, यहाँ पे जब हम लोग किसी पॉइंट्स को शो कर पाते हैं कोऑर्डिनेट्स को, तो इस प्लेन को पर्टिकुलरली कार्टेशियन प्लान बोला जाता है. एंड वेयर देयर इज concept of complex number, we use the argand plan. Now comes to the decimal. What is decimal? The decimals are basically of two types. Okay, so what are those two types? The two types of numbers are, the first is terminating, second is non-terminating. So what is terminating? That basically can be converted into or can be like fractionalized. जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 10/2, दैट कैन बी कन्वर्टेड इंटू 5. सपोज मैं लिखता हूँ 8/4, दैट कैन बी कन्वर्टेड इंटू 2. इवन when I write 10/4, it will be converted into 2.5. So number which can be converted are called as terminating, or those number which are not converted, which cannot be converted in a particular format is called as non-terminating. Suppose we have pi. pi की वैल्यू क्या होती है? 22.7, that is 3.14 something something something. So that is non-terminating. So this non-terminating number repeats after decimal number. So ऐसे repetition चलते रहता है. That are basically called as non-terminating number. Now comes to the rational number. रैशनल नंबर तो भाज्य संख्या, सॉरी, रैशनल नंबर क्या होती है? रैशनल नंबर मतलब जो p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. सो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर. फॉर एग्जांपल, सपोज मैं लिखता हूँ 5/6. 5/6 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली रैशनल नंबर. सपोज मैं लिखता हूँ 10/2, so ये representable है in rational number, so it is called as rational number. Sorry, in p by q form this is called as rational number, but 1/0 is not a rational number. Suppose like when you are looking at this has q value is equals to 0, then it is not a rational number. Now what is the irrational number? This is a note part, just note it down. Root over of non-terminating decimal is basically irrational number. Non-terminating decimal means when I say root over pi, that is irrational number. Root over e exponential, that is irrational number. Irrational number मतलब क्या होता है? That cannot be converted, cannot be written in the form of, cannot, just a minute, not be written in p by q. p by q में जिसको हम लोग लिख नहीं सकते उसको हम irrational number बोलते हैं. इंटीजर क्या होता है? Any number that can be represented on number line can be represented on number line. Okay, so this may be positive, this may be negative as well, and integers को denote किया जाता है z से. So yeah, that is -2, -1, 0, 1, 2. ये हमारे एग्जाम्पल हो गए इंटीजर्स की. होल नंबर क्या होता है? सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0. So 0, 1, 2, 3, this is called as whole number. नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे कि 1, 2, 3 जैसे, बट इट एक्सक्लूड्स 0. इसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है.
Then it comes to even number. Even number क्या होता है? Number divisible by 2. Simple. Number divisible by 2 are called as even number. For example, 8. 8 is divisible by 2. Yes, so it is even number. Suppose 9 divided by 2. Is it divisible by 2? No, so it is odd number. Similarly, we have the definition: number not divisible by 2. Not divisible by 2, that are called as odd numbers. So when we say 9 by 2, it is not divisible, so it is rational. Odd number. It is not divisible by 2, so it is odd number. So these are the odd numbers that are not divisible by 2. Cool. Next, come into the prime number. What are prime numbers? The number which have the factor as 1 and itself. What does it mean? ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स एक तो वो खुद होते हैं और एक तो एक होता है. कैसे? सपोज 7. 7 के फैक्टर्स क्या होंगे? एक तो 1 होगा और एक तो वो नंबर खुद होगा. सो 7 इज अ प्राइम नंबर. बट इसी केस पे अगर हम लोग 8 लेके चलते हैं तो 8 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 1, 2, 4 एंड 8. सो दिस हैव अदर प्राइम फैक्टर अदर देन दिस 2 प्राइम फैक्टर्स. सो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉट अ प्राइम नंबर. नॉट अ prime number. Okay, cool. Next, come to composite number. Number which are not prime number. Number which are not prime are called as composite number. Suppose 8 bola maine, so this is will be your composite number. Okay, cool. So smallest composite number will be 4. Smallest composite number will be 4. Smallest even composite number, this is important. And some exam you will get it डायरेक्टली कि बताइए कौन सा स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर होता है. सो दैट इज 4. कूल. नेक्स्ट कम टू को प्राइम एंड रिलेटिव प्राइम. को प्राइम नंबर क्या होता है? दो नंबर जिनका HCF 1 हो. HCF मतलब हाइएस्ट कॉमन फैक्टर. सपोज 5,7 है तो 5 का HCF क्या होगा? 5 का HCF हमारा क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1. 7 का HCF क्या हो जाएगा? दैट इज 7 इंटू 1. सो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1. सो द when we have the two numbers which are having the highest common factor is 1, then they are called as co-prime. Twin prime numbers. Twin prime number क्या होता है? Two prime numbers that have the difference between them equals to 2. दो होता है जिन दो prime number के बीच का difference. Suppose we have 3 as a prime number, 5 as a prime number, so the difference between 5 and 3 is 2. Similarly, we have 5, we have 7, the difference between 5 and 7 is 2. So this two numbers here, these two sets of number are called as twin primes. These are important when you go ahead in the programming world. तो वहाँ पे twin primes का use होता है. So you must be able to know this. Okay, next coming to the perfect number. What a perfect number? Perfect number is the sum of all the factors of a number is equals to the number itself, then is called as perfect number. How? Suppose we have 6. So 6 के लिए 2 3s are 6. So we have 6 is equals to, what are the factors of 6? 1 into 2 into 3. So 3 plus 2 plus 1 is equals to 6. So the factors and the number itself are the same. So this particular number is called as perfect number. So you have to figure out what are the other numbers whose factors are equal to the number itself. So like 6 is there और कौन से number है. So go for it and find the perfect numbers. Okay, there are two important terms which you must know: place value and phase value. For some numerical based question or kind of in programming world also it is used a lot. So phase value क्या होता है? phase value मतलब वो नंबर खुद, जिस नंबर के बारे में पूछा जा रहा है वो नंबर खुद उसकी वैल्यू हमारी phase value होती है. place value क्या होती है? that is something like units, tens, 100 digit. यानी कि हर जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, सॉरी राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, सो वी आर मल्टीप्लाइंग 10 फॉर each digit. For example, I am writing 5613. So for this number, phase value of 5 will be 5. जो नंबर पूछा जा रहा है वही नंबर उसका फेस वैल्यू होगा. 5 का फेस वैल्यू 5, 6 का फेस वैल्यू 6, 1 का फेस वैल्यू 1, 3 का फेस वैल्यू 3. Now what is the place digit of place value of 5? So place value of 5 क्या होगा? So we can know ones, tens, 100, 1000. The place value of 5 is 1000. So this is how you are going to figure out place value and phase value. Okay, there are some important notes. You can just have a read on it. The first note is 1 is neither prime nor composite number. This is a short trick, like between 1 to 50 there are 15 prime numbers. There are between 50 to 100 there are 10 prime numbers, and so the between 1 to 100 there will be 25 prime numbers. 0 is neither odd nor even. It is not considered as an odd number or an even number. So
दिस यूजुअली एज इट इज एग्जाम में आ जाते हैं एंड यू विल बी आस्क्ड लाइक जीरो क्या होता है, ऑड, इवन, नॉट ऑड, ओनली इवन, नदर ऑड, नॉर इवन. सो दिस you can have to remember. So the fourth is like 2 is the smallest prime number and even prime number, and 3 is the smallest odd prime number. Now your task is to find the smallest composite prime number and smallest odd composite prime number, smallest odd composite number and smallest even composite number. Okay, so fifth one is called as universal factor. क्यों वन को हम लोग universal factor बोलते हैं? क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका फैक्टर वन ना हो. Suppose we are taking 1000, we are taking 100, or we are taking anything 99, everything will have 1 as its factor. Okay, what are factors? Factors is basically the number that can be divisible, that usually divide the particular number. So for example, there is a called as prime factorization method. Suppose we have a number 120, so we will find the factors of 120. So 120, we will do prime factorization method, that is 260, 230, 215, 3, 5. So what factors it should have arise? 2 into 3, 3 into 1, and 5 into 1. This is called as prime factorization method. Now this is the like prime factorization method in which we symbolize it. Now how we can find total number of factor? नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है? देयर इज अ ट्रिक. जितना भी पावर है उसको वन ऐड कीजिए. जैसे 3 + 1 4, इसका पावर 1 है तो इसमें 1 ऐड कीजिए 2, इसमें 1 है तो इसका भी +1 कीजिए तो सो 2. सो टोटल को आप इनटू कर दीजिए बाय एडिंग 1, देन द वैल्यू यू विल गेट will be the particular total number of factors. So यहाँ पे क्या मिल रहा है? 16. So there are 16 factors for 120. You can also check for 120 there are 16 factors or not. सो 120 के लिए 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होगा. यू विल हैव 6, यू विल हैव 8, यू विल हैव 10, यू विल हैव 12, you will have 15, you will have 20, you will have 24, you will have 30, you will have 60, you will have 120, and rather if I missed anything you can count and it should have the 16 factors. Now in factors में हम कैसे फाइंड करेंगे कि कितने odd हैं कितने even है? So for odd factor कुछ नहीं करना है. We have the prime factorization 2 into 2 की power 3 into 5 की power 1 into 3 की power 1. So you have to find out the odd factors. 3 and 5 are odd factors. So उन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए. So 1 + 1 2 and 1 + 1 2. There are 4 odd factors. 4 odd factors. आपको नंबर मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको नंबर के पावर्स को 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना है. एज हमने जो यहाँ किया था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जब निकाले थे, हमने क्या किया था कि पावर में 1 ऐड किया था एंड देन उसको मल्टीप्लाई किया था. सो तो वॉट एवर द वैल्यू वी आर गेटिंग वो हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होता था. अब इस टोटल फैक्टर में कुछ ऑड होंगे कुछ इवन होंगे. तो ऑड निकालने के लिए क्या करना है? ऑड निकालने के लिए इस फैक्टर में देखना है कि कितने हमारे ऑड प्राइम फैक्टराइजेशन वाले नंबर्स हैं. सो 3 और 5 यहाँ पे आए हैं. तो 3 और 5 को हम लोग काउंट करेंगे. 3 और 5 को हम लोग लेंगे एज एन ऑड नंबर एंड इस ऑड नंबर के पावर पे जाएंगे और इस पावर में 1 ऐड करके जैसे यहाँ प्रोसेस करते थे मल्टीप्लाई करेंगे. सो यू विल गेट दी टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स. सो यहाँ 4 आ जाएगा. अब इवन कैसे निकालेंगे? सिंपल, 16 - 4 = 12. So these are the basically the method to find the even and odd factor. So for this is for you. You have the task to find out the value for 720. 720 के लिए odd और even factor निकालना आपकी जिम्मेदारी है. Next it come to division rule. What is division rule? There is a divisor. Suppose मैं यहाँ पे लेता हूँ 24, 8, 3 are 24 and 0. So this is called as divisor, this is called as divider, and this is quotient and this is remainder. So हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 8 into 3 plus 0. So yes, this is basically what I trying to say. Dividend is equal to क्या होता है? Divisor into quotient, है ना, प्लस रिमाइंडर. याद रखिएगा, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फार्मूला. इट्स लुक वेरी इजी एंड सबको कंसेप्चुअली समझ आता है, बट इन केस ऑफ फॉर्मलाइजेशन एंड व्हाट प्रॉब्लम्स यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आता है. सो दिस इज़ द मेन थिंग यू हैव टू रिमेंबर. रेस्ट वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो, लाइक लॉट ऑफ क्वेश्चन इन इट, एंड आपको क्लियर हो जाएगा कि वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट लेट्स गो टू द LCM and HCF. What is LCM? What is HCF? So before moving on to the LCM and HCF, let's try to figure out what is the difference between factor and multiple. So factor, what is factor? Factor is the number that perfectly divides the given number. And what is multiple? Multiple is a number which is perfectly divisible by a number. I hope you are getting the difference. Factor मतलब वो
जो किसी नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर दे, किसी नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर दे, एंड दिस इज कॉल्ड एज फैक्टर। दिस इज द फैक्टर कि ये नंबर को, ये सपोज एक नंबर है जिसको परफेक्टली डिवाइड कर दे, सो दिस इज द फैक्टर। बट इन केस ऑफ मल्टीपल, मल्टीपल इज अ नंबर दैट इज परफेक्टली डिविजिबल बाय अदर नंबर, यानी कि ये मल्टीपल है और ये किसी नंबर से परफेक्टली डिविजिबल हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं, द नंबर विच इज परफेक्टली डिविजिबल बाय अ नंबर, दिस इज कॉल्ड एज फैक्टर। और अगर कोई मल्टीपल है and that multiple is perfectly divisible by that number, then it is called as multiple. Okay, I guess you have a lot of confusion. Let's move on to the real example, then you will have this. Okay, so what is LCM? LCM का full form आपको पता होगा, longest common multiple. Okay, so longest common multiple, and HCF is basically nothing but highest common factor, है ना, highest कॉमन फैक्टर। फैक्टर अभी हम लोग पढ़े, फैक्टर कैसे निकालते हैं। सो लॉन्गेस्ट कॉमन मल्टीपल, सपोज आई एम टेकिंग थ्री नंबर, सपोज दैट इज 8, 24 एंड 60। ओके, सो अब मुझे 8, 24 और 60 में लॉन्गेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो कोई एक ऐसी संख्या, कोई एक ऐसा नंबर जो जो ये तीनों जिसको डिवाइड कर सके। सपोज मैं n को अगर 8 से डिवाइड करूँ, n को 24 से डिवाइड कर सकूँ, n को 60 से, तो वो नंबर ऐसा हम लोग को खोजना होगा जो ये तीनों डिवाइड दे पाए। दैट इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज मल्टीपल। फैक्टर के केस में क्या होगा, हमको ऐसे नंबर खोजने होंगे जो 8 को भी डिवाइड दे, 24 को भी डिवाइड दे और 60 को भी डिवाइड दे। सो आई गेस यू हैव गॉट द डिफरेंस कि फैक्टर में हम लोग डिवाइड करते हैं, मल्टीपल में वो ऊपर रहता है। ओके, लेट्स चेक ऑन इट। 8, 24 और 60, 8, 24 और 60, ये एलसीएम निकालने का फॉर्मूला होता है। सो 8 1 8, 8 3 24 एंड 60 का 60 ही रहेगा। देन वी विल हैव 3 1 3 एंड 3 20 60। सो यू विल हैव 20 into 3 into 8, that is 8 2 16, 160 into 3, that is 480। सो 480 एक ऐसी नंबर है या एक ऐसा नंबर है जिसको 8 भी डिवाइड देगा, 480 को 24 भी डिवाइड देगा एंड 480 को हमारा 60 भी डिवाइड देगा। सो पर्टिकुलरली 480 इज द LCM। नाउ द सेकेंड थिंग इज HCF। HCF कैसे निकालना है 8, 24, 60 का? यू हैव टू डू नथिंग, जस्ट फाइंड दी फैक्टर्स फॉर इट। फैक्टर कैसे फाइंड करना है, वी हैव डन 2 2 4, 2 2 2, 2 1 2, देन सिमिलरली फॉर 24, 2 12, 2 6, 2 3 and for 60, so 2 30, 2 15, 3 5s and we have 5 1 3 1. So let's find out the common number. So 2 is common, 2 is common, and then we have no common factor in this, so 1 1 1. So what is the HCF? The common factors in this, so 2 into 2 into 1, so that is basically 4. So 4 इसका HCF हो गया। आप समझ रहे हैं 4 क्या है, 4 8 को भी डिवाइड देगा, 4 24 को भी डिवाइड देगा एंड 4 60 को भी डिवाइड देगा, है ना, ये इसको डिवाइड देगा। एंड इन केस ऑफ LCM क्या होता था कि हमारे पास एक नंबर आता था जो 8, 24 और 60 तीनों उसको डिवाइड देते थे। इस केस में 8, 24 और 60 को ऐसा नंबर खोज रहे हैं जो उसको डिवाइड दे रहा है। सो दैट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन LCM एंड HCF। आई होप यू आर क्लियर। Then there are two more concepts, that is LCM of fraction and HCF of fraction. So LCM of fraction, suppose you have P by Q on numerator by denominator. So what will be the LCM? So LCM of fraction is LCM of numerator by HCF of denominator. HCF of fraction निकालने के लिए HCF of numerator मैं बताता हूँ, I guess you are getting confused, and LCM of denominator ये क्या है, ये है कि जब हम लोग LCM निकालते हैं किसी फ्रैक्शन का P by Q का, आई सपोज P by P Q by R S करके कोई नंबर है, तो इसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं, LCM निकाल रहे हैं। सो LCM निकालने के लिए हम लोग ऊपर वाले का LCM निकालते हैं, नीचे वाले का HCF निकालते हैं। जब हम लोग LCM इस फ्रैक्शन का निकाल रहे हैं तब, और जब हम लोग इस फ्रैक्शन का हम लोग HCF निकालते हैं तो ऊपर वाले का HCF निकालते हैं, नीचे वाले का LCM। We will learn about in the next video, like questions basically. So these two things are also important, just have a read on it कि LCM और HCF को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, that is usually equal to product of two number। वो क्या है, we will have the real question on it। Suppose जैसे अभी हमने निकाला था एक नंबर का, तो कोई दो नंबर है 8 और 24, सो इसका जो LCM है वो क्या निकलेगा, LCM हमारा निकलेगा इसका, चलिए निकाल ही लेते हैं, 8 24, 2 4 जा 8 12, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3 जा, सो LCM will be 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। सो 24 इज दी LCM। HCF क्या होगा,
HCF हमारा इसका हो जाएगा 8 एंड 8 का क्या होगा 2 4 2 2 2 है ना 2 2 इंटू 2 इंटू 1 24 का क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू आई गेस 2 इंटू 2 4 then we will have 2 12 2 6 2 2 2 2 plus 3 so यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा HCF will be your 8 so what I am trying to say is HCF को जब LCM से multiply करेंगे that will be the product of our two number which we had just find out the else for which we have find the LCM HCF तो LCM HCF कितना निकला 24 गुणित 8 और हमारा नंबर क्या था 24 और 8 ही था बट किसी और केस में भी ये वैल्यू मैच करती है सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से वी विल हैव दिस क्वेश्चंस लेटर ऑन और या दिस इज अगेन वन थिंग LCM जो होता है वो HCF का मल्टीपल होता है कैसे यहाँ पे LCM 24 निकला HCF 8 है तो वी कैन सी कि जो 8 है वो 24 को डिवाइड दे रहा है सो दिस इज इट अबाउट ऑल द बेसिक थिंग इन नंबर सिस्टम इन नेक्स्ट वीडियो वी विल हैव द क्वेश्चन थैंक यू फॉर योर टाइम